Hello dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine with the grace of Almighty Allah. This is Mukhtar sir here, and today I am going to discuss the new concept, and that is Nasties. Nasties और Nastic Moment. आज का टॉपिक जो है दैट इज Nasties, or you can say the Nastic Moment. Nasties or Nastic Moments in case of plant systems. ठीक है, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं a sort of moment, growth moment in case of plant parts, and that growth moment is referred as Nasties or Nastic moments, or simply Nasty या Nastic moment. As far as the tropic moments are concerned, we have discussed so far the tropic moments in plant systems, and today we are going to discuss the another moments here. These are known as Nasty or Nastic moments in case of plant systems. Tropic moments we have discussed so far are the sort of growth moments of plant parts in the form of a response towards the external stimulus, in which we have discussed that the direction of response moments was directional one, यानी कि direction of response moments was determined by their direction of stimulus. ठीक है, और direction of environmental stimuli. वहां पे जो ट्रॉपिज्म और ट्रॉपिक मोमेंट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं वो डायरेक्शनल मोमेंट्स है, यानी कि उनकी जो डायरेक्शन है उस रेस्पॉन्स मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट वाज डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलाई. ठीक है, different type or different stimuli, external environmental factors which act as a stimulus for the plant part. Accordingly, the plant part responds to that system in the form of a growth moment, and that was referred as tropism, and that was the directional moment. But as far as the Nastic moments are concerned here, these are sort of responses in terms of movement of the plants, but in that this moment the direction of the movement or direction of response is non-directional one, यानी कि it is not determined by the direction of stimulus. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट पार्ट होली एंड सोली जो मूवमेंट शो करता है, एंड दैट मूवमेंट is non-directional one. It is neither towards the direction of stimulus nor it is away from the direction of stimulus. In fact and indeed, yes, this is the moment in which directional movement or directional response is around all possible directions. All possible direction means no direction. You may have heard, you may have heard this concept in vector physics also. यहाँ पे हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है, यहाँ पे नेस्टीज और नेस्टिक मोमेंट्स हम आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेस्टीज और नेस्टिक मोमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे हम, दीज आर response moments
of plant pots towards the external environmental stimuli, ठीक है। तो यहां पे नेस्टिक मूवमेंट जो है दैट इज रेस्पॉन्स और रिएक्शन, दैट इज रेस्पॉन्स और रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ growth moments. Or we can say these are response moments of plant pots towards the external environmental stimuli in which the direction of response is independent upon the direction of is independent of the direction of stimulus. Shabash. Every response, every growth movement or movement in plant pot, growth movement or the movement in the plant pot in a response to the external stimulus depends upon the external stimulus. But here in Nasties, direction of response is independent of the direction of stimulus, that is, it does not depend upon the direction of, neither it is towards the direction of stimulus nor it is away from the direction of stimulus. In fact, the direction of response in nestic moment is non-directional one. ठीक है, तो these are nestic moments. These are response moments or growth moments, you can say, of plant pots towards the external environmental stimuli in which direction of response is independent of the direction of stimulus. Right? Now, nestic moments are direction of nestic moments are not determined by the direction of stimulus. Direction of nestic moments are not determined by the direction of stimulus. बात को समझिएगा प्लीज। यहां पे डायरेक्शन ऑफ द नेस्टिक मोमेंट, डायरेक्शन but not the nestic moment. Direction of nestic moment is independent of, it is not determined by the direction of stimulus. Although the stimulus induces the response moment in terms of nestic moment, but the direction of the nestic moment is not determined by the direction of stimulus here. तो यहां पे nestic moments in plants जनरली आपके सिलेबस में 2 टाइप्स है इसके। एक तो है थिग्मोनेस्टी, सेकंड है फोटोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी क्या है? थिग्मोस मीन्स टाइट एंड नेस्टी मीन्स समथिंग पर्टेनिंग टू नेस्टिक मोमेंट्स। यानी कि जब अगर आपका स्टिमुलस टच है, अगर स्टिमुलस, if the stimulus is
touch, and if this stimulus induces the nastic response in plant parts, then the phenomena will operate that is known as thigmonasty. Again, I will repeat this, that we have nasties or nastic moment is here. Nastic moment is the non-directional movement, response movement of plant parts in which direction of stimulus, in which direction of the response is not determined by the direction of stimulus. On the basis of nature of the stimulus, nastic moments are being studied under different headings, but as far as your syllabus is concerned, we have two headings here. One is thigmonasty and second is PhotoNasty. Thigmonasty means it is the nastic moment in which external stimulus in the form of a touch induces the nastic moment in the plant part. Thigmonasty is the phenomena in which plant parts shows their nastic moments by virtue of external touch as as environmental stimulus, by virtue of a touch as external stimulus. यानी कि touch is stimulus here, and if this touch induces the nastic moment, and phenomena is said to be thigmonasty. यहां पे अब thigmonasty पे आ जाएंगे हम. Thigmonasty, it is a nastic moment in which the touch as external stimulus induces the movement in plant parts. फॉर एग्जाम्पल, आपने मिमोसा पुडिका सुना होगा. मिमोसा पुडिका, इसको टच मी नॉट भी बोलते हैं, कॉमन नेम टच मी नॉट, टच मी नॉट. ठीक है. द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका, लीव्स, अगर इनको एक्सटर्नल एनवायरमेंट में स्टिमुलस मिलता है टच इन द फॉर्म ऑफ ए टच, यानी कि नेचर ऑफ द स्टिमुलस इज टच. अगर हम लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका को टच करेंगे बाय फिंगर, बाय एनीथिंग, बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी किसी भी ऑब्जेक्ट से लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका को आप टच करेंगे एंड दैट विल फोल्ड इनवर्डली. ठीक है, वो फोल्ड हो जाते हैं इनवर्डली, यानी कि वो फैल नहीं जाते हैं. लीव्स ऐसे होते हैं, मतलब मिमोसा पुडिका के, अगर इनको टच किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो टच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस फॉर दैट लीफ. ठीक है, एंड लीव्स कर्ल इनवर्ड्स, यानी कि वो फोल्ड इनवर्ड्स होते हैं, बंद, क्लोज हो जाते हैं. तो क्लोजिंग ऑफ द लीव्स इज द मूवमेंट, बट किस डायरेक्शन में वो क्लोज हो जाएगा, दैट इज अराउंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, उसकी खास पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है. तो wholly and solely that part of the leaves as here part of the plant act in all the directions, and they show the nastic moments. They show the nastic moments by infolding or folding inwardly when the same leaves feel a touch from the external environment as a stimulus, तो उस चीज को हम, उस फिनोमेना को हम थिग्मोनेस्टी बोलते हैं. ठीक है, तो नेस्टिक मोमेंट्स, यहाँ पे नेस्टिक मोमेंट्स के जनरली दो किस्में हैं. एक तो है आपका थिग्मोनेस्टी, सेकंड इज फोटोनेस्टी. थिग्मोनेस्टी क्या है?
It is a nastic moment in which the touch as external stimulus. Touch यहाँ पे stimulus है, यानी कि nature of the stimulus is touch. That induces the moment in plant pot. For instance, we have a mimosa pudica, touch me not plant. इसके जो लीव्स जो इसके होते हैं, जब इनको टच किया जाता है एनवायरमेंट में इनके लीव्स को टच किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो विद द रिजल्ट दैट टच एक्ट्स एज स्टिमुलस एंड कॉजेज द लीव्स टू फोल्ड इनवर्ड्स और टू फोल्ड इनवर्डली, ठीक है, इन ऑल अराउंड ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. तो उस मूवमेंट को हम यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है. These are nestic moments in terms of PhotoNasty. तो सेकंड वन जो है आपका दैट इज PhotoNasty. PhotoNasty इनको PhotoNastic मोमेंट्स भी बोलते हैं. PhotoNastic मोमेंट. तो क्या है बेसिकली ये PhotoNasty और PhotoNastic मोमेंट? PhotoNasty इज द नेस्टिक मोमेंट. ये नेस्टिक मोमेंट ही है, लेकिन यहां पे जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है दैट इज लाइट. फोटो मीन्स समथिंग पर्टेनिंग टू फोटॉन एंड फोटॉन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइट, ठीक है. समथिंग पर्टेनिंग टू लाइट यानी कि यहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है दैट इज लाइट, एंड यही इंड्यूस करता है रेस्पॉन्स मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट इन प्लांट पॉट्स, मे बी लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा, ठीक है. सिटम होगा, ठीक है, सिटम, लीव्स, फ्लावर्स एटसेट्रा. तो यहां पे PhotoNasty में क्या है? इट इज a nestic movement in which light as external environmental stimulus causes the plant pot to respond in terms of a nestic moment in which direction of the movement is not determined by the light as a stimulus here, ठीक है. पहले इसको डिफाइन करेंगे. PhotoNasty, it is a nestic moment in which light as external environmental stimulus, in which the light as external environmental stimulus causes brings the movement or folding, simply movement, brings the movement in plant pots. For example, you may have heard about certain flowers. Shabash. You may have heard about certain plant flowers that light brings the nestic moments, non-directional moments in plant pots. For instance, dandelion flower. डैंडेलियन फ्लावर के बारे में आपने सुना होगा कि ये डैंडेलियन फ्लावर जो है, द पेटल्स इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होते हैं, जो ओपन होते हैं जब डे लाइट होती है. डैंडेलियन फ्लावर, ये डैंडेलियन प्लांट है, उसका जो फ्लावर होता है ये येलो कलर फ्लावर होता है, ठीक है. तो इसके जो ये जो फ्लावर होता है डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है, तो दैट इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डे दिस फ्लावर, डैंडेलियन फ्लावर ओपन्स आउट, यानी कि उसके पेटल्स ओपन आउट हो जाते हैं, यानी कि दे ओपन आउटवर्डली. द पेटल्स ऑफ द डैंडेलियन फ्लावर
open outwardly during daylight. यानी कि light acts as an external environmental stimulus here that causes the movements, nastic moments in flower of certain plants, just like dandelion flower. ये ओपन हो जाता है जब डिम लाइट होती है। डिम लाइट में क्या होता है, यानी कि ड्यूरिंग द डस्क, ठीक है, डस्क नाइट आवर्स में, इवनिंग आवर्स में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो कॉन्सिक्वेंटली लो लाइट इंटेंसिटी causes the dandelion flower to fold inwardly. वो inwardly fold होता है और close होता है, यानी कि closing and opening of flower dandelion is stimulated by a light as a stimulus here, and that causes the response moments. These are non-directional and यानी कि every possible direction, whole direction, यानी कि these are not in the direction of the light or opposite to the direction of the light. These act around all possible directions of that particular plant pot and causes the movement, opening and closing of dandelion flower. ठीक है। सिमिलरली आपने मून फ्लावर में देखा होगा, मून फ्लावर क्लोजेस द पेटल्स ड्यूरिंग डे टाइम, अपोजिट है इसका। तो डैंडेलियन में हाईलाइट इंटेंसिटी फेवर्स द ओपनिंग ऑफ द फ्लावर पेटल्स, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर occurs by outward movement of the petals, ठीक है, outward movement of the petals, and low light intensity at the dusk, यानी कि light or evening hours causes the petals to move inwardly, which result is the closing of flower. On the other hand, in contrary, यानी कि यहाँ पे एक और प्लांट है, दैट इज उसको मून प्लांट बोलते हैं, उस फ्लावर को मून फ्लावर बोलते हैं, तो उसके पेटल्स जो है क्लोज हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ओपनर्स ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स, ठीक है। तो उसमें भी लाइट एक्ट्स एज अ स्टिमुलस एंड विच induces the response moments which are nastic one, and that result is the opening and closing of a flower, ठीक है, that is it.